So, in this video lecture, we will be going to discuss the chapter number 1 of chemistry, grade 11, which will mainly focus on mole, Avogadro's number, and their relationships. The interconversion of mole will be also discussed in this video lecture. So, let's get started without further delay. So, for for a basic understanding, let me explain scalars and wait. I hope now it's visible. Stoichiometry. I don't know whether I'm pronouncing it right or not, but stoichiometry. Okay, stoichiometry. Stoichiometry is a Greek word which has been derived from Stoichian. Stoichian is an mean or the word for element and metry. Stoichian and metry are the two words which make up stoichiometry, and metry means measurement. So the measurement of element is called stoichiometry. Okay, I hope you would have understand. It tells us the relationship between quantitative or the quantities of the reactant and the product during the chemical reaction. We use stoichiometry on large scales or on very small scales when we have to do practical calculations or practical experiments in industries for making stuff or in lab for testing or for experimental purpose. We have to use proper amount of substance, which can neither be taken as approximate, and we have to go for actual value with calculations, with particular calculations to go for or to get good results or exact accurate results. That's why we use stoichiometry, and it is one of the most crucial chapters, I think, which is related to practical chemistry. So let's understand some basic points first of all, okay? So atomic mass, what is atomic mass? Atomic mass is the number of proton, neutron of an element, okay? There's a difference between atomic mass, formula mass, and molecular mass, okay? Then we will be discussing molar mass too, okay? Atomic mass is basically of an atom or of element. Formula mass is used for compounds, ionic compounds, okay? And molecular mass is used for covalent compounds. This is the basic thing. Up now, all atomic mass, formula mass, and molecular mass, which we know are represented by AMU. It is the measurement of the amount of atoms and neutrons and protons present in an atom. It is measured in AMU. Okay. So when atomic mass, and formula mass of a substance, what atomic, formula, or molecular mass of a substance represented in grams instead of AMU is called 1 mole. Remember that 23 AMU and 23 gram are not equal, okay? 23 AMU of Na and 23 gram of Na, sodium, are two different things. 23 AMU means 1 atom, okay, but 23 gram does not means 1 atom. It means 1 mole. So whenever the molecular mass, atomic mass, or formula mass is in grams, you don't think कि उन्होंने AMU हटा के सिर्फ gram लगा दी. No, that's not like this. The values changes means the quantities changes. AMU is a relatively smaller quantity as compared to grams. So whenever we have grams, we have to use 1 mole is equals to 23 gram. Now understand this concept that AMU not equals to gram. 23 AMU does not equal 23 gram. 23 gram is a relatively larger quantity as with respect to or as compared to AMU. So AMU जो होगा वो atomic mass, formula mass और molecular mass होगा. But जो 23 gram होगा that will be a measurement. Actually measurement जैसे हम एक spoon से 23 gram निकाल के रख रहे हैं, that is 23 gram of Na. या हम weight जो होता है weight machine या balance machine जो होती है उसके पे हम weight करें. So that is 23 grams, okay?
तो जब भी 23 ग्राम, sorry 23 gram of Na or sodium has been taken with a spoon or with anything, it's called 1 mole. Okay, 1 mole of a substance. And whenever 18 gram of H2O, you know H2O's molecular mass is 18 gram. अब does not mean कि 18 gram वो छोटा सा 18 AMU जितना होगा. 18 AMU is so small as it is only one molecule. One molecule is a relatively small unit that we cannot even see. So that's 18 gram, not AMU, not AMU. Okay, 18 gram which you have taken. Oh, sorry, with the balance. So that 18 gram is equals to 1 mole. Up now understanding the basic concept of Avogadro. Avogadro numbers. Avogadro was a scientist and he worked on predicting that how many number of particles are present in specific quantity of atom, molecule or particle. Ab you don't have to confuse yourself. You don't have to say. We say कि 23 ग्राम मतलब किसी भी एक मोल के अंदर जो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे वो 23 ग्राम, वो सॉरी 6.02 × 10⁻³ होंगे. अब एक मोल ऑफ को एनी सब्सटेंस और एनी एटम, एनी मॉलिक्यूल और एनी कंपाउंड are equal to 6.02 × 10⁻23 particles. अब particles over here represents atom or molecules or आयंस और आयनिक कंपाउंड में जो भी हमारे पास है नो आयंस बनते हैं दैट. अब you won't, the particle size does not need to have be same. Okay, the particles does not need to be same. Means the H2O particle would be I think relatively smaller than Na. Na is a huge a large atom, whether so H2O is relatively small. So you understand by this कि जो एवोगाड्रोस नंबर है और जो Na है हमारे पास, वो किसी भी एक मोल में जो पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं उनको कहते हैं. ओके, अब एक मोल जो होगा वो कोई भी ग्राम में रिप्रेजेंटेड किया हुआ नंबर होता है इंस्टेड ऑफ AMU. ग्राम में से जब हम AMU हमने काट दिया और हमने ग्राम लगा दिया. अब AMU काट के ग्राम लगा दिया. मैंने आप लोगों को ये बात लास्ट टाइम अभी आई एम रिपीटिंग इट क्वाइट वेरी ऑफन बिकॉज आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 23 AMU वो क्वांटिटी उतनी नहीं रहेगी, क्वांटिटी चेंज हो जाएगी. AMU के साथ चेंज हो जाएगी, ग्राम के साथ चेंज हो जाएगी बिकॉज देर आर नॉट इक्वल यूनिट्स. They are not equal units. AMU is not equal to gram. 1 AMU does not equal to 1 gram. Some AMU is equal to some gram. कोई ना कोई वैल्यू है ग्राम की स्पेसिफिक की जो एक AMU के इक्वल होती होगी आई थिंक. तो अब जो 6 पावर 23 पार्टिकल जो होंगे एक मोल में किसी भी सब्सटेंस के जिसके अंदर उसके ही मॉलिक्यूलर मास जितना ग्राम होगा, जिसको हम सिर्फ मोल समझ लें, अब ग्राम वो आगे रहने दें, ग्राम वो जितना भी होगा वो मैं आई हैव एक्सप्लेन, ठीक है. तो किसी भी एक मोल में अब किसी भी सब्सटेंस होता है, Na का हो सकता है और H2O का हो सकता है, सब में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल होंगे. हो सकता है इसके पार्टिकल छोटे हों, H2O कितने हों, उसके इतने बड़े हों. अब इट इज नॉट नेसेसरी कि सबके सेम उसमें पार्टिकल हो. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस नाउ. अब जो मोलर मास होता है ना, दैट इज द मास ऑफ एनी सब्सटेंस in gram per mole, sorry, in gram per mole. It's actually a comparison between the molecular mass and the amount of substance. होता सेम है बट यूनिट चेंज हो जाता है. इट्स ग्राम पर मोल. ओके, इट्स सेम एज मॉलिक्यूलर मास. जैसे हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कहते हैं ना, सो दैट इज सेम. ओके, अब व्हाट इज मोलर वॉल्यूम. वैसे लेट्स गो अबव, थोड़ा सा ऊपर जाके अपन समझते हैं. अब हमें ये बात थोड़ी समझ में आ गई है कि एक मोल है 23 ग्राम ऑफ हमारे पास Na. फॉर एग्जाम्पल Na हमारे पास एक एलिमेंट है. अब लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग. Na एक एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है. उसका एटॉमिक मास क्या है, 23 ग्राम. 23 AMU, सॉरी AMU. ओके, 23 AMU जो है, जब हमने उसको ग्राम में लिखा 23 ग्राम Na किया तो वो किसके इक्वल हो गया, 1 मोल ऑफ वन मोल
ऑफ एन ए की इक्वल हो गया, ठीक है, उसका 1 मोल बन गया। अब जो भी 1 मोल होगा उसके अंदर 23 ग्राम एन ए होने की जरूरत है। 1 मोल एन ए का 23 ग्राम होगा। 2 मोल कितना होगा? 46। फिर 3 मोल होगा 69। इस तरह से यह डबल होते जाएंगे। ओके, टू पे भी यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में 3। अब बस हमें इतना समझ लिया। और उसके अंदर 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल होंगे। ठीक है, इसी तरह से अब सेकंड पे आ जाते हैं। H2O है हमारे पास। H2O का एटॉमिक मास जो है हमारे पास वो 18 AMU। 18 AMU को हमने ग्राम में लिखा। 18 ग्राम जो H2O है वो किसके इक्वल हो गया? 1 मोल के इक्वल हो गया। अब जो 1 मोल है उसके अंदर 6.0 × 10⁻23 पार्टिकल है H2O के। मतलब H2O 6.02 × 10⁻23 टाइम्स है। और इसमें Na 6.0 × 10⁻23 है। दिस इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स। ओके, अब नाउ मोलर वॉल्यूम पे आते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। सबसे पहले ये बात समझ लें, द वॉल्यूम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। इट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सॉलिड्स और लिक्विड। हम जब भी कोई लेते हैं किसी भी चीज की वॉल्यूम, यू यूजुअली टेक इट जब हम वो चीज इट्स फ्री फॉल या वो फ्री टू मूव हो, तो हम मोलर वॉल्यूम लेते हैं। सो दैट्स द रीजन। जो मोलर वॉल्यूम है वो सिर्फ गैसेस का होता है। इट विल बी ओनली ऑफ ऑक्सीजन, इट विल बी ओनली ऑफ H2O, इट विल नॉट बी ऑफ Na। NaCl का या Na का या उसका मोलर वॉल्यूम नहीं होगा। तो, तो इसमें ये कहता है कि जब हम 1 मोल लें किसी भी सब्सटेंस का या किसी गैस का, सॉरी, 1 मोल लें फॉर एग्जाम्पल H2O का, और उसको हम टेम्परेचर दें टू, वो सॉरी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर 273 केल्विन। ओके, 273 केल्विन का टेम्परेचर एट 180 प्रेशर पे। तो जो उसकी वॉल्यूम होगी वो वॉल्यूम होगा 22.4 DM क्यूब इज अ यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो उसका जो वॉल्यूम आएगी वो होगी 22.4 DM क्यूब। अब कोई भी गैस जिसका 1 मोल हमने लिया और उसको हमने फराहम किया अ टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन with 1 प्रेशर, so its volume will eventually become 22.4 DM क्यूब। ओके, कंडीशन क्या है? टेम्परेचर 273.15 के, और 273 के हम कहते हैं प्रेशर जो 180 एम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लेट्स गो फॉर रीडिंग। आई डोंट थिंक वी शुड रीड, we should go with more. The atomic mass, formula mass, and molecular mass. अब atomic mass represents element, formula represents compound, and molecular represents molecules. Okay, जो किसी भी सब्सटेंस का ग्राम में लिख दिया जाए। ग्राम में लिखना इज नॉट इम्पोर्टेंट, इन्होंने इस तरह से बताया हुआ है दैट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ये ग्राम में ले लिया जाए। 23 AMU जो मास है उसको हम AMU हटा के हम 23 ग्राम ले लें का। ठीक है, बाय मेजरिंग दैट इज कॉल्ड मोल। ओके, एग्जांपल्स गिवन ऑफ एटम। एटॉमिक मास का, एटॉमिक मास हमें पता है 1 मोल 16 होता है, तो 16 ग्राम ले लिया। NaCl का 58 होता है, तो 58 AMU होता है उनका। एम जो एटॉमिक फॉर्मूला मास होता है वो 58.5 ग्राम में ले लिया। अब जब हमने 58.5 ग्राम ऑफ NaCl लिया तो दैट इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, जब वो 1 मोल के इक्वल हुआ तो मतलब इसके अंदर 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स भी हो गए। सो दिस इज फॉर रियल। ओके, एवोगाड्रोस नंबर, एनी नंबर ऑफ एटम आयन जो हो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, जितने भी नंबर ऑफ एटम हो, आयन हो या मॉलिक्यूल हो, दैट आई एक्सप्लेन कि उसके अंदर कितने H2O पार्टिकल्स हो या कितने O पार्टिकल हो या कितने NaCl है, दैट इज कॉल्ड 6.02 × 10⁻23 और वो एवोगाड्रो नंबर होता है। ओके, अब इट्स सेइंग कि ये जो है ये एवोगाड्रो नंबर के उसमें इक्वल हो सकता है। अब यू कैन से, अब यू वुड डेफिनेटली आस्क कि अगर हमारे पास O है तो O के भी 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल है 16 ग्राम में, लेकिन जो O2 है जो कि 32 बनता है आई थिंक उसका ग्राम 1 मोल, उसमें भी 6.02 है। तो अब नाउ यू हैव टू कंसिडर दैट कि जो
आपने दोनों को इक्वल रखा कि उसमें भी 6.02 आए और इसमें भी 6.02 आए, तो कैसे आए? इसमें O2 6.02 है और उसमें सिर्फ O 6.02 है। अब ये नहीं कह सकते कि आप डबल हो गए कि 6.02 का 2 हो गया। नो, दैट्स नॉट लाइक दिस। वो O2 दो टाइम बार बार है, O2 6.02 टाइम है, O नहीं है, दैट अनदर मॉलिक्यूल, वो दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए। ओके, अब दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। हम इसको एवोगाड्रो के नंबर में लिख सकते हैं। देखें H2 को इन्होंने क्या लिखा, 6.0 इन 10 पावर 23 मॉलिक्यूल है। विद रिएक्ट विद हाइड्रोजन के कितने हैं, 6.0 इन 10 पावर 23। अब O2 मैटर नहीं कर रहा, O2 कैन बी, ओके, कैन बी ओवर हियर बिकॉज O2 जो है वो एक मॉलिक्यूल है, तो उसमें हम पूरे मॉलिक्यूल को कंसिडर करेंगे, एक एक ऑक्सीजन एटम को नहीं कंसिडर करेंगे। अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, अगर पूरा का पूरा वो होगा तो उसको तो वो कंसिडर होगा। ओके, द इक्वेशन स्टेट्स दैट कि इसने क्या प्रोड्यूस किया, 2 × 6 पावर 0 to 3 पावर मॉलिक्यूल। अब आप कह सकते हैं कि ओ खत्म हो गया, नो, ओ यहाँ पे हमारे पास साइड में आ गया। अभी भी ओ उतना ही था, अभी भी ओ उतना ही है। दोनों में 6.0 × 10 पावर 23 पार्टिकल है, इसमें भी 6.2 × 10 पावर 23 पार्टिकल। इधर भी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, so particles don't change. Mole calculation is what, so this is all that I wanted to explain. Now in the next lecture I will be explaining mole calculations and everything else.